friends, today India Forums will take you to the special screening of Karan Wahi and Saibaan Asim's upcoming short film, Have You Met You? In this special screening, we came across many television as well as Bollywood celebrities who were present to support this film. Bollywood's well-known director Farah Khan also made a presence at this event. I think Karan's done a fabulous job and it's so different for him क्योंकि normally Karan भाई को हम funny या joke humorous way में देखते हैं, तो to do a intense role like this and to do it so naturally and to have directed the movie, I think is commendable. The concept is nice, yes, a little simple and sweet. No, I think Karan has acted very well actually. I was quite surprised because it's not what we see him doing. I think Karan should make a full-fledged movie now. For the short film, Karan himself made many efforts from scripting to dialogue writing. Along with this, Karan Wahi and Gaurav Bajaj have produced the film. Well, all the present actors gave outstanding feedback for the film. So come, let's find out more about this film and the concept from Karan and Saibaan themselves. The reason of keeping this was to have a feedback from people, because sometimes what happens is when you make something, आपको उसमें बहुत सारी अच्छाई भी दिखती है, बहुत सारी बुराई भी दिखती है, तो आप ओवर एनालाइज भी करते हो अपने आप को. तो मुझे ये सिर्फ देखना था कि जो मैसेज मैं अक्रॉस देना चाहता था या जो मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही थी, क्या सिर्फ वो मुझे अच्छी लग रही है या इन सबको भी अच्छी लग रही है. तो लकीली सबको, आई डोंट नो सबने क्या बोला है, बट लकीली सबने अच्छा ही बोला. आफ्टर मेकिंग दिस फिल्म आई हैव बिकम आई हैव चेंज्ड फॉर द बेटर. मैं बहुत जल्दी ना सॉरी बोल देता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़ते हैं, फिर हम और लड़ते हैं, फिर हम लड़ते रहते हैं, नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे. एंड देन वन डे जस्ट रियलाइज इट यू आर लाइक व्हाई वाज आई एंग्री, बिकॉज सब ठीक हो जाता है. सो यू डोंट रियलाइज हाउ मच टाइम यू वेस्टेड. मेरे साथ हुआ था ये कुछ ऐसा ही कनाडा में. आई एक्चुअली मेट अ करण भाई एंड आई एक्चुअली मेट अ करण भाई. तो उसको थोड़ा ट्वीक किया मैंने फिल्म को, तो वो थॉट आया था. एंड बट आई थिंक अगर गौरव, इफ़ यू वुड हैव नॉट बीन गौरव, फिल्म बनती नहीं. अरे देखो बड़ी लंबी उम्र है यार इसकी. मैंने कहा सो अगर ऑनेस्टली इफ़ ही वुडंट हैव बीन ऑन बोर्ड, दिस वुडंट हैव बीन अ फिल्म. ये कॉन्सेप्ट रहता पेपर पे. It's a nice thought, and I think it's a thought which everyone will relate to. Very simple, basic thought. People have liked it, people have understood, which is a very, because short films का एक हमेशा end थोड़ा twisted होता है. Some people don't understand, and Wahi and Saibaan have acted amazingly well. Like I've never seen them so natural. They are superb, and probably because of the acting, the film is looking brilliant. It's a good thought to share. Okay, how everything is within you. How you can change a lot of things around you if you have the whole positive mind. So that's the whole thought about the film, which is simple and clear. I think अगर वो दिख रहा है तो हमारा पर्पस जो है सॉल्व हो गया है ना. और द रीज़न ये हमारा पहला टॉपिक था. सी वी हैव लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वी हैव टू डू, लेकिन हमने ये पिक किया, मैंने और वाही ने कहा यही बनाते हैं क्योंकि काफ़ी कनेक्टेड था. वाई? बिकॉज ऑल्सो वाही हैड एक्चुअली मेट समवन इन अ मेट्रो हुज नेम वाज करण वाही. एंड देन वी थॉट ऑफ के दो लोग अगर मिल देंगे तो उनकी लाइफ में क्या क्या डिफरेंस होगा. हम सोचो दो लोग अगर एक ही हैं, वो एक दूसरे की लाइफ कैसे बदल सकते हैं. देन वी थॉट ओके व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो जाए. तो वो थॉट हम वीव करते हमें ऋत्विक भी मिला, उसने भी थोड़ा सा फीडबैक दिया कि ऐसा कर लो. हमें लगा हाँ सही बोल रहा है, ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो दैट्स हाउ वी केम अप विद दिस होल आइडिया. एंड वाही टुक द इनिशिएटिव कि लेट्स डू इट. मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ. और फाइनली वी केम आउट विद दिस. तो आई एक्चुअली बिलीव इन दिस थॉट 100%, एज इन कम्प्लीटली आई बिलीव इन इट. यार आई वुड लाइक टू से कि वेट फॉर इट प्लीज़. इट्स अ वेरी सिंपल थॉट, वेरी नाइस थॉट, and something close to us. That's what we feel about life, me and Wahi especially. And once you watch it, it might help you, it might not also, but it will leave you smiling, I think, by the end of it. That's what I feel. So please watch it. Karan, we have heard that you're wanting this film to take a position in film festival. So what would you like to say on that? Guys, I'm really sorry. मैं ये फिल्म अभी ऑनलाइन कहीं नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू सेंड द फिल्म टू द फेस्टिवल्स. हमने उसी एस्पेक्ट और उसी ऑब्जेक्टिव से बनाई थी ये फिल्म. आज की जो स्क्रीनिंग थी जस्ट वाज टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम आवर फ्रेंड्स who can actually without fear tell us if they like the film or if they don't like the film.
लकीली मोस्ट ऑफ देम हैव लाइक्ड द फिल्म। और जिनको जो पसंद नहीं आया वो मैंने ऑब्वियसली आई रिटन द पॉइंटर्स, बट इट्स लकीली नॉट अबाउट द स्टोरी, it is about either the edit or the pace or the music which we can we can figure out और उसी के लिए ये स्क्रीनिंग रखी गई थी। एंड जैसे ही फेस्टिवल्स में फिल्म जाएगी उसके बाद मैं आपको खुद बता दूंगा कि कब मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। आई नो यू आर वेटिंग फॉर इट, बट प्लीज़ वेट अ लिटिल मोर। Thank you so much for supporting, and I've been seeing the messages that you've been retweeting and tweeting and everything about the film. So I hope you see the film really soon and you'll be proud of me. ये तो थे करण एंड सहबान। नाउ लेट्स हियर फ्रॉम द सेलिब्रिटीज। अरे ग्रेट यार, मुझे पता नहीं था इसने डायरेक्ट भी किया है, सो रियली प्राउड ऑफ हिम। मैंने इसके साथ, हम दोनों ने काम साथ में बहुत किया, मगर एंकरिंग साथ में बहुत किया। सो फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई हैव सीन हिम एक्टिंग एंड ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। बहुत अच्छा काम किया दोनों ने, सहबान ने और इसने, दोनों ने काम बहुत अच्छा किया। और एट द सेम टाइम मुझे पता नहीं था, ये सरप्राइज एलिमेंट है कि इसने डायरेक्ट भी किया। सो रियली प्राउड ऑफ हिम कि, एंड इट्स अ शॉर्ट स्वीट फिल्म जो अच्छी लगी, 15 मिनट के साथ में मैसेज भी है। सो नाइस वन इन टोटलिटी, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। शॉर्ट फिल्म्स हैं, सो यू एज यू एक्सपेक्ट दैट मच ओनली कि यार इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए, परफॉर्मेंसेज अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें सबका मिश्रण है। सो दैट्स अ गुड थिंग। यार तू बड़ा हो गया छोटे, यार तू बताया ही नहीं यार, कमाल है यार। Two of my very close friends, and also the third one is also a very close friend because he's produced it, so he wasn't in front of the camera. But Sehbaan Azim, Karan Wahi, and Gaurav Bajaj, all of them have done a brilliant job, and I'm very proud of them. I loved it because it's a concept that, you know, basically we all know this, but हम भूल जाते हैं ये बात। To get a reminder of something like this, that you know all the solutions are within you, is a very good thing, and I'm very happy to see that. I'm pretty surprised. Good work. I was expecting कि सित्यापा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छी लगी फिल्म मुझे। Though it's inspired by Fight Club, I think, right? Not really, but yeah. A little bit of that thing is there, but a day in Wahi's life and उसका good conscience जाग गया, वो अच्छी बात है। I hope वो ऐसा ही कर रहा हो। फ़ोन करके बोल देता हूँ मैं टाइम पे आ जाऊँगा कल, because Wahi is like that, थोड़ा सा frustrate हो जाता है जल्दी वो। बाकी fantastic, mind blowing. Very nice. It's very good. Didn't expect so much from Wahi and Sehbaan. They both are such close friends of ours, and they've done a brilliant job. It's very natural. It's very free flowing. I love the music. I love the effects. What do you love, Neil? I love the chemistry between both of them, which is very natural. Yeah, and that's the whole thing, right? It's just the two of them. It's just a normal conversation, and by the end, it also gives a message. So it's a complete package. Have you met you? There are so many of me that by the time I end up meeting all of them, this world will get over. Absolutely, like I just said that. You know, we spend time with people, we spend time with friends, but have we ever really spent time with ourselves? And that's the most important thing. If you don't spend time with yourself, if you don't know yourself, no matter how much you try in the outer world, it's not really gonna keep you at peace or make you happy. It's all about knowing yourself and accepting who you are, and then dealing with the outer situation. To the boys, my boys, Wahi boy, our boys. Wahi boy, Sehbaan boy, we are so proud of you. So proud of you for taking this step. It also encourages us to think more, to do more, and more films, guys, come on. Exactly. And we wish them all the very best. And this is just the beginning. Boy, come on, boy. See, we didn't know his name was Karan Wahi. I also didn't know till the time we shot for it. Then I realized, oh shit, I am also Karan Wahi. अभी तक हमसे ये झूठ बोल रहा था कि इसका नाम सहबान अजीम है, लेकिन इसका नाम सहबान अजीम तो है ही नहीं। हाँ, झूठे। मैं भी करण वाही हूँ, तुम भी करण वाही हो, तुम भी करण वाही हो, हम सब करण वाही हैं। Have you met you? I just asked you. I have met myself 50,000 times, but not like this. Yeah. We should meet Good each job. other. We are very proud of him. Very proud of him. I love the thought. Direction is very nice, but there are few things which can be, you know, done. Like he can work on it and it can be better. So I've told him, and I'm sure if you know that is my view. And otherwise, both of them, they've done a great job. I've loved the thought and the way they've shot and everything. It's really nice. Yeah, because such films, it really works really well in the festivals and stuff. Film festival में जब जाती है तो वहाँ पे ऐसी films अच्छा, you know, they do well.
So I really hope. I think apparently they're sending it to the festivals, and if that happens, I'm sure it's going to do well for him. So the boys, they've done a great job. I'm really proud of them. Okay, so they've been great friends, and I think वो भी दिखा है फिल्म में, so which is very important when two एक scene चल रहा है, अगर chemistry अच्छी होती है, so it looks really good. So I think so they've done a great job, and they've been really close friends for such a long time, and so it's good to see both of them working together and doing this. I'm really happy for them, and I wish them luck. It was really like short and cute. The deal is कि हम लोग सब सोचते हैं कि हमारे अंदर जवाब है, and that's what it talks about. So we're all going through depression and this and that these days, and everyone is talking about depression, talking about letting it out, talking about all of that. Now, from last few days, I've been hearing a lot about depression. About depression and. So I don't know. I think it's a great message yeah, in that case. so in that case, it's a great film. I think it's very real. कुछ भी इसमें कुछ भी ड्रामा कुछ भी नहीं है. It's just the real life जो होता है एक एक्टर के साथ सुबह उठने से लेके everything. You have to watch that. मैं क्यों बताऊँ? It's very nice. It's very natural, and it's just so real जैसा ये है खुद. I loved the film. I think Seban and Karan, both of them have done a fabulous job. It's very nice. Very nice the film. I really loved it. बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स और एरियाज़ होते हैं जो आप टेलीविज़न में या ऐसे मीडियम्स में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, एंड आई थिंक वाही ने वो अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से उठाया, एंड ही इज़ एक्सप्लोर्ड समथिंग लाइक दिस, एंड ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब. मुझे नहीं पता था कि वो लिख भी सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है, सो ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन ऑल दोज एरियाज़. मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्रिस्पली 15 मिनट में डिलीवर हो जाता है, एंड यू कम आउट एज अ हैप्पी पर्सन. दैट्स इट. I completely resonate with a concept like this, and मतलब and it's about time people here मतलब who are in our vicinity and also people from our industry also sample some other things which is जो शायद content और ज़्यादा जितना intriguing है उससे भी ज़्यादा intriguing बना देंगे. तो I really believe in this concept. Whatever Vahi हम is. सारी प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में बड़ी करते हैं. They are really not that big sometimes, and if you look deep within you can look for a solution, and you will find the solution by yourself. It's just कि आपको वो अपने लिए टाइम निकालना होता है, and I think Vahi said that very beautifully. Seban, तो बहुत टेंशन ले रहा था, but you and Vahi have done an excellent job. Yeah, we are super proud of you, and I hope you get a lot of accolades and awards for this one, and we have some footsteps to follow. So the best wishes for Vahi. Vahi though I'm very fond of for many years, and of course Seban is a very good friend, and I wish them both all the very best, and I hope that the film does really well. Wherever it goes, people receive it very well, and अभी audience को देखने में वक्त है. मैं चाहूँगा कि बहुत सारे awards जीते picture, and when it has a King's March into the audience hearts whenever they see it. So. What they want to say about Have You Met You? Well, Karan, India Forums wishes you all the very best for your upcoming short film and also congratulates you for your new venture. For more updates on your favorite TV stars, like, share and subscribe to India Forums on YouTube. Addiction at its best. Hi guys, this is Karan Vahi and you're watching IndiaForums.com, and please subscribe. The YouTube link है ना. Ashima Chavda, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.